खुशियों के नाचे मोर, खुशियों के नाचे मोर। स्नेह प्यार की तुझसे बाबा बांधी है जीवन डोर, बांधी है जीवन डोर। स्वर्णिम युग की भोर, स्वर्णिम युग की भोर। स्नेह प्यार की तुझसे बाबा बांधी है जीवन डोर, बांधी है जीवन डोर। जन्मों का सुख पाए, तेरी ही महिमा के बाबा गीत सदा हम गाए, गीत सदा हम गाए। पाके अनोखा प्यार तेरा हम, पाके अनोखा प्यार तेरा हम, हो गए भाव विभोर, हो गए भाव विभोर। स्नेह प्यार की तुझसे बाबा बांधी है जीवन डोर, बांधी है जीवन डोर। दिल मेरा लगा ही रहता हर पल तेरी ओर, हर पल तेरी ओर। स्नेह प्यार की तुझसे बाबा बांधी है जीवन डोर, बांधी है जीवन डोर, बांधी है जीवन डोर, बांधी है जीवन डोर।
అయితే ఇంకొకరు అతను ఎవరో గురు అంటే అతను దీని వల్ల రైట్ అయ్యింది. ओम शांति। ओम शांति। मेरा नाम है लक्ष्य और मैं मेरा भाई के साथ आप सबको वैदिक मैथ सिखाएंगे और हम सब मिलके वैदिक मैथ सीखेंगे। आज हम सब वैदिक मैथ सीखेंगे। तो जो 3 दिन पहले वो क्लास किए उससे हम कुछ टॉपिक्स रिवाइज करेंगे और हम कुछ नए टॉपिक्स आपको दिखाएंगे क्योंकि वैदिक मैथ में बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं और सिर्फ एक दिन में वो उसको पूरा नहीं कर सकते हैं, तो ये बहुत सारे दिन में ऐड अप हो रहा है। अभी लवित वैदिक मैथ स्टार्ट करें। तो तो मेरा नाम लवित है। तो अब मैं मेरा भाई के साथ वैदिक मैथ पढ़ाएंगे। So now we're going to start. So the first thing we have to today is, what is Vedic math? So Vedic math is many different methods that make solving different types of math problems a lot simpler and a lot faster. So it uses very simple concepts, and those go with very easy normal math problems to solve math that can be easy or otherwise really hard. The hard types would actually take a really long time if you were solving with the traditional methods. Like, for example, the problem 43 times 94, if you're trying to solve it with Vedic, for example, 43 times 94, if you were trying to solve that with Vedic math, it would take less than 30 seconds, probably a lot faster than that. And it would even faster if you did it in your mind only. But if you tried to write it out and solve it with the traditional methods, it would take a lot longer than that, and it would require you to think a lot more too. So, topic 1, bases and complements. That's the first thing we're going to learn. It's the very basic topics of Vedic math. So what are bases? So a base is just really, you know what a base is, but you don't know what it's called. So it's just a 1 followed by a lot of zeros. सभी एक नोटबुक और पेन के साथ बैठेंगे और इस स्लाइड से नोट्स करेंगे, क्योंकि ये बहुत सारा इंफॉर्मेशन है, तो आप इसको
notes में लिखते जाएंगे. जैसे examples of bases होंगे. तो एक एग्जांपल होगा 10. 10 एक बेस है क्योंकि 1 और फिर 0 उसके after 1 हो गया. So you can also have 1,000. तो एक 1 और फिर 3 0 हो गए. तो आप और आप हमेशा के लिए जाते रहेंगे. ये भी होगा. तो ऐसे बेस होते हैं कि एक 1 है और फिर उसके बाद zeros हैं. तो 10 एक बेस है क्योंकि 10 एक 1 है और फिर एक 0 है. और 1000 एक बेस है क्योंकि there's 1 and then 3 zeros. And then 100,000, and then you can keep on going with the number of zeros. So the base of a number, the base of a number. Okay, next. No, the base of a number is closest base. So like the base of 7 is 10. Because 7 is closest to 10, and 10 is its nearest base. Or if you have 108, then that would become 100 because that's the closest. So जैसे अभी slide पर show हो रहा है, कुछ bases का examples दिखाई दे रहे हैं. For example, the base of 89 is 100 क्योंकि 89 ये दो bases के बीच में है, 10 और 100, 10 and 100. 89 is closer to 100, so the base of 89 would be 100. In the same way, 126. Mokshita, do we have to write this? Agar aap examples, if you want to write the examples, you can, but mainly just write the definition and do the practice. If you want to write the definitions and all the explanation, you can do that for understanding. And then for what are we talking about? 126. Then it's between 100 and 1000, but it's closer to 100. So because it's only 26 away, so then its base would be 100. 126 is only 26 away from 100, but from 1000 it's like 874 away, and that's a lot more. So the base of 126 is 100. So yeah. So on the slideshare presentation, then there's some practice problems you can see on the slideshow presentation. For example, the first one is base of 14. So everybody write this in your notebooks and solve them. So 14, the two bases it's near are 10 and 100, but which one is it closer to? You can write it in the chat.
आप सभी bases को समझ रहे हैं? Did you all understand what bases are? And how to find the bases of a number? अगर आपके पास कोई questions है तो आप raise hand करें. Oh, सब chat में 10 लिख रहे हैं, वो सही answer है. क्योंकि 14 is much closer to 10 than it is to 100. ना आपके लिए definition is presentation में दिखाई दे रहा है. A base is a number that is just a 1 followed by a number of zeros. So 120 का base क्या है? It's between 100 and 1000, but where is it closer to? I think everyone's saying 100. G 100 correct answer है क्योंकि 120 100 से नजदीक है. It's only off by 20, and from 1000 that's a really long way. इसको लिखना है. ये practice problems आप लिख सकते हैं practice के लिए और definition उसको लिखें so that you have a reference and you don't forget this. So write down the definition so you don't forget, and do the practice so that you can have practice. Number 3. Yeah, write it on the board. So number 3 is base of 709. शकम्बरी आप इसको नहीं समझ पा रहे हो? अनम्यूट करके बताओ कि इसमें क्या नहीं. What did you not understand? और जो तीसरे क्वेश्चन के आंसर दे रहे हैं वो सही है 1000. जी अहाना. भैया जैसे आप 120 का निकाल रहे हो, जैसे आप 120 का भी 100 निकाले, तो आप वो कैसे निकाल रहे हो वो नहीं समझ पाई मैं. Wait, so not exactly. Okay, so 120 100 और 1000 के बीच में है, right? Yes. 100 और 1000 दो bases है और 120 उसके बीच में है. तो हमको देखना है कि 120 is it closer to 100 or is it closer to 1000? 120 is closer to 100, so we write the base of 120 is 100. Okay, thank you. Okay. जब आप चैट में आंसर लिखते हैं तो क्वेश्चन नंबर उसके पहले डालें क्योंकि हमको पता नहीं चलता है कि आप थर्ड आंसर कर रहे हो या फोर्थ आंसर कर रहे हो. Okay, so third answer 1000. Oh. सभी third question का answer जानते हैं. Everyone knows the answer to the third question. But so then what's the answer to the fourth question? उसको chat में लिखें. Okay, रिद्धिमान आपके पास आंसर है? Is it 1000? जी, क्योंकि Wait, which one are we on? 4 1318
वो 1000 के नजदीक है और 10,000 1318 is closer to 1000 than it is to 10,000. If it's less than 1500, it's closer to 1000 than it is to 10,000. Or What? no, 1,500? You mean 5,000. Sorry. 5,500? Okay. आप सभी इस कॉन्सेप्ट को समझ रहे हो? Yes. अगर कोई प्रश्न है तो हैंड रेज करें और अनम्यूट करेंगे. बोर्ड नहीं दिख रहा है. अगर बोर्ड नहीं दिख रहा है तो हमको पिन करो और फिर रिसाइज करो शेयर स्क्रीन को. वो आपको मतलब खोल सकते हैं, हमने आपको स्पॉटलाइट करा हुआ है तो क्लियरली दिख रहा है. जी. Okay. So then, which base is 618 closest to? 618 is जी. भाई जी अगर 5000 हो तो उसका बेस क्या होगा? 5000 अगर आप स्कूल में पढ़े थे 5000 राउंड अप होता है. So 5000, the base of 5000 would be 10,000 instead of 5,000. Okay, let me write that on the board. So 5,000 is between 1,000 and 10,000, right? 5,000 is between 1,000 and 10,000. So 5,000 is only 4,000 away from 1,000, but is 5,000 away from 10,000. So in this case, the base of 5,000 is only 1,000 because it's much closer. It's this much closer to 1,000 than it is to 5,000. Okay. It will be 1000. Yes, और अगर हम करते हैं 5,500 तो ये दोनों बेसिस के बीच में होगा. 1,000 से 4,500 और Somebody's asking where we're from. We're in California. और इससे 4,500 भी है. I can't understand this question. Can you explain me again? Okay, तो हम 5,500 का बेस निकाल रहे हैं. We're trying to find the base of 5,500. So 5,500 is between 1,000 and 10,000, right? So which one is it closer to? So the distance from 5,500 to 1,000 is 4,500. Distance from 5,500 to 1,000 is 4,500. And the distance from 5,500 to 10,000 is also 4,500. So then we can just round up and take this and take the base to be this. If it was less than this, we'd have taken this because this number would have been bigger. But if they're the same, we round up and take this number. Okay. Did you understand? Yes. Okay. So आप सभी और share practice problems आप कर सकते हैं.
618 का बेस क्या है? तो चैट में जब लिखो। आप आंसर करें तो आप उसके पहले 5 लिख सकते हैं, तो क्योंकि तब हम जान जाएंगे कि कौन से क्वेश्चन आप आंसर कर रहे हैं। हैंड रेज करो। भैया अगर डिस्टेंस इक्वल हो तब क्या करेंगे? अगर डिस्टेंस इक्वल हो, जैसे 5500 के एग्जांपल में डिस्टेंस इक्वल है, 4500 और 4500 दोनों बेस के डिस्टेंस इक्वल है, तो हम ऊपर की बेस लेते हैं या दोनों बेस ले सकते हैं, वो सेम होगा। मतलब दोनों आंसर करेक्ट होंगे? जी, लोअर बेस ले सकते हैं या ऊपर की बेस ले सकते हैं। ओके, थैंक यू। सभी लिख रहे हैं कि 5 की आंसर है 1000। सिक्स क्वेश्चन की आंसर क्या है? बेस ऑफ 178। सिक्स्थ, जी, ध्रुव दीप्ति ने सही लिखा, ज्योति वंश सही लिखे हैं, आहाना भी। जी, 178 का बेस है 100, और ये दोनों बेस थोड़ा हायर है, पर वो भी इजी है। So number 7 is base of 8694. So what's the base of this one? जी, सभी सही लिख रहे हैं, 10,000. So number 8, 9873, base of 9873. सभी 8 के आंसर। ज्योति और परी ने लिखा 1000, वंश और ध्रुव दीप्ति ने लिखा 10,000। तो let's check this. Okay, 9873. Okay. परी और ममता ने लिखा है 1000, ज्योति ने लिखा है 100,000। तो ये नंबर है 9873। तो अगर आप एक नंबर लाइन लेंगे और यहाँ पर होगा 1000 और यहाँ पर होगा 10,000, तो 9873 आसपास कहाँ होगा? Which one's closer? तो यहाँ 2000 होगा, और 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000 और फिर 9000। तो हमारे पास 9873, तो वो आसपास यहाँ होगा 9873, और वो आपको इजीली दिखाई पड़ता है कि 9873 is much closer to 10,000 than it is to 1,000. So you can tell here that the answer is actually 10,000. The base of 9873 is 10,000. Did everyone understand that? Yeah. Okay. तो वो सब practice problems हो गए हैं। Okay. Okay. तो हम next topic पर continue करते हैं। What are complements? अगर किसी के पास questions है तो raise hand करें।
Yeah. So, what are complements? So, you can say it. So the complement is something like the opposite of a number. So to get the complement of a number, you first have to take the upper base, not the nearest base, the upper base of your number, and then subtract your number from that base. It's a little difficult to understand. Let me write that. Complements is really long word. So let's say we have to find the complement of 7. What's Why a do you always use the word small? So first example is 6, not 7. So we have to find the complement of 6. So who can find the two bases that 6 is between? No, wait. So first, which, if we were to try to find the complement, then which two numbers is it between? It's between 1 and 10. 6 is between 1 and 10. But in this case, we'll just take the upper base. Even whether it's closer or not. So even if we took 4, we'll take the upper base. Even though it's closer to 1, just take the upper base. And now put 10, which is the upper base, minus 6. So this goes here, and this goes here. 10 minus 6 equals 4. So the complement of 6 is 4. So like this, we can say the complement of 6 is 4. And if we take our next example, what's an example? 86. That's so much better. Then, so then now 86, oh, that's too small, right? 86 is between 10. Okay, Mokshita के पास एक question है. मेरा था कि मुझे कॉम्प्लीमेंट्स का मतलब मुझे अच्छे से समझ नहीं आया. Okay, complements is so what you have to do is find the complement of a number. So हमने पहले bases पढ़े थे, right? We had just learned bases, how to find the base of a number. Because, for example, 86 is between 10 and 100. Those are the two bases it's around. So then we take the upper base, because 86, 10 is less than 100. So we'll take 100. Okay, Mokshita, are you still understanding this? नहीं. So after you get 86 and 100, you're going to do 100 minus 86. So when you have 86 and 100, you're going to do 100 minus 86. Okay. And if you solve that, you get 14. Jyoti Chitte, okay. Ow! Jyoti's going to try to explain. ओम शांति. मक्षिता, पहले हमें मतलब कॉम्प्लीमेंट्स में हमें क्या करना है ना, पहले मतलब जैसे हमने अभी 86 को एग्जांपल लिया है, सो 86 का हमें अपर बेस लेना है. सो 86 आता है 10 और 100 के बीच में. सो हमें इसमें अपर बेस लेने को कहा है. सो हम 100 को चूज करेंगे एंड देन हमें इसको कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हमें इसे 100 को 86 से माइनस कर देना है एंड देन तुम्हें कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा. अंडरस्टैंड मक्षिता? हाँ. Thank you. ओके. Thank you, Jyoti. So
86 का complement है 14. So then if we have 117, this is the type of example that's actually, this is a better type of example. So we have So One- अभी हम तीसरे एग्जाम्पल ले रहे हैं. 117. Complement of 117. So there's 100 and there's 1000. So it's between these two. Huh? So it's between, I mean, it's big. If you were to find the base of 117, you'd end up with 100. Now the reason that you have to find the upper base is because you can't do 100 minus 117, or that would be all like messed up. And that's why you find the upper base. So then, no matter how close it is to 100, you'll have to put it with 1000. And then you go 1000 minus 117. So if you were to subtract this, then you'd have to regroup like 6 trillion times. Well, you'd have to regroup a lot. तो इस प्रैक्टिस को आसान करने के लिए हम एक मेथड नेक्स्ट सीखेंगे, पर पहले कॉम्प्लीमेंट्स को अंडरस्टैंड करना है. 1000 minus 117. So like this, we can find the answer. क्योंकि अगर हम subtraction करते हैं, we'll get 3 and then 8 and 8. 883. So the answer will get 883. Which means, and 117, the complement is 883. And if we were to spend our time figuring out the complement of 883, it's 117. So 117 and 883, they're both complements of each other. So the complement of 117 is 883, and the complement of 883 is 117. So in that way, we have a fourth example. Some have written already, which is the upper base, so you can just write What? 675. So since we have it's between the same bases, we're gonna choose the same base, 1000. Then we're gonna have 1000 minus 675. Complements भी बहुत simple topic है, तो हम quickly next topic पर जाएंगे. 325. I will subtract. We still have 8 problems. Okay. So अभी practice questions board पर देख रहे हैं We'll just और screen share पर देख रहे हैं. तो आप सभी ये practice questions को कीजिए और फिर हम एक मिनट के बाद पूछेंगे कि आंसर क्या मिला.
Did everyone solve all the questions or still solving? Okay, so raise your hand if you know the answer to the first question. I think we can write this over again. Okay. Jyoti ne hand raised. 73 will be the answer. 73. जी वो correct answer है क्योंकि higher base है 100 और 100 minus 27 is 73. दूसरे question का answer किसी को मिला? If you got the answer, then raise your hand. And Dhruv and Deepthi have also raised hand. That's why I wanted to jump for. Brother, 672 answer है. जी 672. अभी हम next slide पर जाएंगे और एक method दिखाएंगे जो complements को solve करने. So this is still about compliments, but now it's what? So ये दूसरे topic है finding the complement. So it's an easy method to solve. Does anyone have a question on what complements are? Okay, Prithviraj. No. Shrayan Shataksha. ओम शांति ये जो कॉम्प्लीमेंट का फोर्थ वाले का आंसर था 675 वाले को सॉल्व करके जो आंसर आया था वो 325 था. जी वो fourth example 675 का complement, the answer is 325 because we can take 1000 the upper base, subtract and get this answer. Okay, next topic is finding the complement. हम कैसे complement को find करने में faster? How can we find the complement faster than we are doing it right now? So use method all from 9 and last from 10. ये notebook में लिखें all from 9 and last from 10. ये very important Vedic math का एक method है. All from 9, last from 10. इसको नोटबुक में लिखें और क्योंकि ये एक बहुत बेसिक मैथ का मैथड है. So पहले example है 547. And you need to explain this because तो हम 547 का complement को find करेंगे. तो on that side you move forward. Just go fast. Go forward. okay, so 547. हम इसको vertically लिखेंगे. इस 5 547 जैसे slides में देख रहे हैं 547 ऐसे और फिर सबको So I can't even draw it. So we'll take 9 minus 5 and 9 minus 4 and then 10 minus 7 all from 9 and last from 10. इस point तक सभी समझ रहे हैं. If you have a question at any time, raise your hand. किसी का hand raise नहीं आ रहा है तो मैं continue करता हूँ. 9 minus 5, 9 minus 4, 10 minus 7. This makes 9 minus 5 is 4. 9 minus 4 is 5.
and 10 minus 7 is 3. So the complement of 547 is 453. Because we can see here, this makes 453. So the complement of 547 is 453. Which means that the complement of 453 is also 547. So in this way, this is one faster way to solve the complement. Use all from 9 and last from 10. We subtracted all the numbers from 9 and the last one from 10. Which is much faster than if you're grouping to a line of zeros on with the traditional method. So अक्षत की कोई question है? ये 9 और 10 कैसे आ गया? So in the 9, so all of them should be 9s, except that the last one should be 10. So इस Vedic method का नाम है all from 9 or last from 10. तो हम सब digits को 9 से subtract करेंगे और last वाला digit 10 से subtract करेंगे. Okay. So that would show that 9 minus 5 is 4. 9 minus 4 is 5. 7. 10 minus 7 is 3, which makes the answer 453. एक और example लेते हैं. आप इसको screen share पर भी देख सकते हैं. So find the complement of 21893. ये एक बड़ा नंबर है पर इसका complement भी आसानी से मिल सकता है. Because it doesn't really matter that much how big the number is. It's always going to be as easy. It just might take longer because it's a bigger number. So So then we can see that's not lined up. all from 9 and last from 10. So this is still 2, this is still 1, 8, 9, 3, but we're just subtracting it from all from 9 and then last from 10. So when we do that, then 9 minus 2 gives us 7, and then 9 minus 1 is 8, 9 minus 8 is 1, 9 minus it's aligned with 9 minus 9 is, I know, is 0, and 10 minus 3 is 7. So then the complement of 21893 is 78107. Which means that both of them are complements of each other. So the complement of 21893 is 78107. And we did this like really fast. We didn't have to do a lot of subtraction because otherwise we'd have to do 100,000 minus 21893, which is much more difficult than 9 minus this, 9 minus this, 9 minus this, 9 minus this, 10 minus this. So Is everyone understanding I just up to realized this we have moment? this is why. Not working. Okay. Yeah. If anyone has a question, then they can ask right now. So everyone is understanding complements and how to find them. Because the bases and complements and this method are very important to doing any of the other Vedic methods. Okay. So we'll just continue to the next topic then. Because nobody has any questions. Oh, some practice. Oh, a lot of practice. So if you want to try to get faster at finding the complement,
then What? you can try to do this in your mind. So like that means that you don't use your any pencils or paper or pens. Like You for just do it in your mind. 2 and 893, then I'm not going to write. Just do it for it. Then instead of doing like, okay, let me take one of these problems example. 824. So instead of writing 9 minus 8, 9 minus 2, 10 minus 4, I'll just think 9 minus 8 is 1. 9 minus 2 is 7. 10 minus 4 is 6. So you didn't write anything out except for the problem number, like the number in the problem and the answer. So we already gave the answer to this one, but the other ones, try to do these ones a little fast because they're very easy. You're kind of Okay. pushing it. So, Akshat, do you have a question or an answer? मेरे को 1, 7 और 6 समझ में नहीं आया. 1? Okay, so your question 8 hai on the board. No, he's talking about numbers 1, numbers 7, numbers 6. We could just take in the example 824. So right now, this is question number 8. We're trying to find its complement. So I was just doing this mentally. 9 minus 8 is 1. 9 minus 2 is 7. And 10 minus 4 is 6. If it's difficult to do this in your mind, then you can just write it out. But if you want to get a little faster, then just start doing this mentally and it'll become really easy. And you won't even need to write 9 minus 9 minus 10 minus. Okay. And that's how you get 176. And if you're trying to do the same thing in 176, you'd end up with 824. Okay. Mokshita, आपके पास पहले क्वेश्चन का आंसर है? वो अगर 1 डिजिट होगा तो हमें 10 से करना है कि 9 से करना है? From 10. क्योंकि अगर 1 डिजिट है तो लास्ट डिजिट होगा ये, so हम इसको 10 से करेंगे. And if you actually thought about it, then in the other way we used to do it, then the upper base is 10. So we would be going 10 minus 8. The way we did it before, we took the upper base as 10. So we can, it works the same as the previous method we were using. Okay. Okay, so do you know the answer to the first question? 10 minus 8? Okay, Jyoti को answer मालूम है? 2 will be the answer. Yeah. Yes. Answer to number 8 is 2. 8? A good question. No, answer to number 1 is 2. I just wrote 1. Okay, so then दूसरे question का answer क्या हो? वेद का question या answer है? Second. 7. जी. वो सही है. 3 का complement is 7. 3 से 7, 8 से 2. Okay. तो फिर तीसरे question का answer क्या है? हम थोड़ा quick इसको कर रहे हैं. Third answer, Akshat? या फिर प्रश्न पूछना है. 7 answer is 613. Oh, he's doing number 7. Number 7, 613. That's correct, but right now we're doing number 3. We're trying to find the answer number 3. Your answer is correct for number 7. We're just trying to find number 3 right now. Adhan, आपका answer है? भैया क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर 87 आएगा.
Okay, और question 3 का answer है 28. 28. No, question number 4 का 87 आएगा. Okay, 4 is 87. तो किसी को और fifth नंबर का 5 का 7 आंसर है? और 5th वाले का 7 आंसर आएगा. Okay, Oh, तो this one's a special one. ये 7 पर 07 आंसर आएगा क्योंकि क्योंकि अगर आप 7 का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो आपको 3 मिलेगा, पर 93 का 07, क्योंकि जब आप 07 करेंगे तो आपको 93 मिलेगा. तो हम बोल रहे हैं कि 93 का कॉम्प्लीमेंट है 07 क्योंकि अगर हम 07 का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो वो 93 होगा, पर अगर हम 7 का कॉम्प्लीमेंट लेंगे वो सिर्फ 3 होगा. And complements have to be with each other. That's why we need this extra 0. So whenever just add the zeros to the start to keep the same number of digits. In this way, because complement 07 is 93, but complement of 7 is 3. 07 and 7 are numerically equivalent, but we will just keep it 07. Om Shanti. Om Shanti. Its answer is 872. कौन सा? 6. 6. 872. और किसी और का ध्रुवन दीप्ति. अचानक आपको याद. किसी को नंबर 7 का आंसर है? Number 7 का answer. Jyoti. 613. 613. Correct. Okay, और वेद आपके पास number 8. वेद and आपके पास आंसर है? Yes भैया. 8th का आंसर है 176. 176 is the answer of 8. And that is correct. So for these last 4 questions, you can do these for your own practice, these last 4 questions. Because right now it's becoming time and you can do these ones by yourself also. If anyone has a question about how to solve complements or bases, or any of the topics you did, then just raise your hand. if you have any questions about any of the topics we just did, then you can raise your hand right now. Can I tell the answer of 7, 9, अभी हम 2, 8, 8, 3, 6, 2, 1, 2, 7, 3, 5, 8, 2. वो नंबर 12 का आंसर था? Okay, हम ये answers next class में देखेंगे. तो अगर किसी के पास questions है ये topics के बारे में तो वो पूछ सकते हैं. वेद को प्रश्न पूछना है? तो सभी को समझ में आया बेसिस और कॉम्प्लीमेंट्स? वंश के पास एक question है. Yes. Oh, he's saying that Okay. he does understand. So इसको समझना, this is important to understand because bases and complements are the base of all the next things that are in Vedic math. All the things that we can do to get faster are based on bases and complements.
Okay, so I don't think we can really start that yet. पृथ्वीराज आपके पास एक क्वेश्चन है? If I want to learn Vedic math, then what can I do? वैदिक मैथ सीखने के लिए ये जो पढ़ा रहे हैं ना हम लोग, इसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और रिवाइज कर सकते हैं इसको, और बुक्स भी आते हैं वो भी आप पढ़ सकते हैं। मतलब वैदिक मैथ का बहुत सारे बुक भी होते हैं। और पृथ्वीराज अभी और भी लोग फर्दर क्लासेस लेगा, तो आप लोग साथ में कर सकते हैं। हम एवरी फ्राइडे यहाँ पर क्लास लेंगे। ये स्केड्यूल में हम एवरी फ्राइडे क्लास लेंगे। तो अगर किसी के पास क्वेश्चंस नहीं है तो हम यहाँ पर क्लास एंड कर सकते हैं और इसको एंड कर सकते हैं। 5 मिनट मेडिटेशन कराएंगे। ओम शांति। 5 मिनट मेडिटेशन करा के क्लास एंड करेंगे। लक्ष्य 5 मिनट मेडिटेशन कराइए और मेडिटेशन करा के क्लास एंड कीजिए। जी दीदी। ओम शांति। शरीर को ढीला छोड़ दें। देखें कि मैं एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ। मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ। ये शरीर एक मंदिर है और मैं आत्मा इसमें एक देवता। मैं आत्मा अभी परम धाम चलती। चांद सितारों की दुनिया से पार सूक्ष्म वतन में आ गए। सूक्ष्म वतन में मुझ आत्मा को दिखाई दे रहा है ब्रह्मा बाबा, जो फरिश्तों के बादशाह, जो शिव बाबा ने एक रथ के जैसे हमको मुरली सुनाए। सूक्ष्म तन से पार चलते हैं। अभी मैं आत्मा परम धाम में। सिर्फ लालिमा ही लालिमा बिखरी दिखाई दे रही है। हमको शिव बाबा दिखाई दे रहे हैं। वो शांति के सागर, प्रेम के सागर, आनंद के सागर, हम उसके सब रंगों की किरणें मिल रहे हैं। इस स्थिति में स्थित रहें थोड़ी देर के लिए। अभी मैं आत्मा पूरा चार्ज हो गया।
मेरा चमक कहीं गुना बढ़ गई है। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, शांत आत्मा हूँ, खुशनसीब आत्मा हूँ। अभी हम नीचे आएंगे अपने शरीर के पास, और भी नीचे, सूक्ष्म तन से पार, उससे भी नीचे, हम चांद सितारों की दुनिया से भी नीचे जा रहे हैं। अब हम अपने शरीर के पास आए हैं। देखें कि अपने शरीर उस स्थिति में अभी तक हैं जिससे आपने उसको छोड़ा था। जब हम अपने शरीर में प्रवेश करते हैं, तब शांति के वाइब्रेशंस हमारे शरीर से फैल जाते हैं। और शांति की वाइब्रेशंस तब हमारे सराउंडिंग्स में जाते हैं। और वो शांति की वाइब्रेशंस पूरे घर को शांत कर रहे हैं। दोनों हाथों को आपस में जोड़ें और फिर उसको धीरे से रख लें। महसूस करें कि हाथों में पॉजिटिव एनर्जी आ रहा है। और उसको अपने आंखों पर रखें और चेहरे पर फिरते हुए अपने आंखें खोल लीजिए। ओम शांति। ओम शांति। और कुछ बोलना है लक्ष्य? हम वैदिक मैथ का क्लास फिर से करेंगे फ्राइडे पर, नेक्स्ट फ्राइडे। ओके, आप सब बच्चों के लिए आपके ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप में आज की मुरली का क्विज भेजा गया है ना। तो आज जो भी आपने मुरली पढ़ा है तो जरूर वो 10 क्वेश्चंस रहते हैं, उसको सॉल्व करके भेजें। तो टुडे मुरली क्विज से आप कौन मुरलीधर बनेगा वो आपको ग्रुप में भेजा जाएगा फिर। ठीक है, डेली का मुरली भेजा जा रहा है ग्रुप में, तो आप उसको सॉल्व करके भेजें। गूगल फॉर्म है। और जो कॉन्सेप्ट्स हमने क्लास में पढ़ाए उसको प्रैक्टिस करते रहना। वेरी गुड। हाँ, उनको होमवर्क दे देना चाहिए था आपको 1 वीक के लिए, तो सब होमवर्क करते और क्या। जी दीदी, हम होमवर्क सेंड करेंगे थोड़े देर। हाँ ठीक है, तब सब प्रैक्टिस करते रहेंगे, आप होमवर्क दे देंगे तो सब बच्चों को अच्छा लगा वैदिक मैथ्स लक्ष्यलावित ने जो पढ़ाया? अच्छा, क्लियर हो रहा था? अच्छा, है ना? देखो आप लोगों के लिए उन्होंने कितना मेहनत किया होगा, क्योंकि वो खुद पढ़े हैं लेकिन पढ़ाने के लिए भी कितना मेहनत किया होगा, है ना। तो थैंक्स नहीं किया आप लोगों ने? क्यों रिद्धिमन? थैंक यू भाई जी। थैंक यू भैया और थैंक यू भाई एक। चलो ठीक है ना। तो इस प्रकार से हर सप्ताह में 1 दिन का आपका क्लास होगा, और अगर ये क्लास ज्यादा है तो हो सकता है बीच बीच में भी रखेंगे, इसलिए। और फ्राइडे सैटरडे इसी में ही रहेगा ना क्लास, तो सभी ध्यान दें। और कल का भी क्लास बहुत अच्छा है, कोई मिस नहीं करना। अच्छा, ओम शांति, गुड नाइट। सुप्रतीत कुछ कह रहा है? दीदी मैं ये कह रहा था कि संडे को वहाँ लिखा, रूटीन में लिखा था कि क्विज है, तो किसका क्विज है? वो आपका ही क्विज है, जो आप लोगों ने सब फोटो भेजे है ना, वो वही क्विज होने वाला है। तो कोई मिस नहीं करना, संडे को भी क्विज होगा। ठीक। ठीक है दी। हाँ।
ओम शांति। एंड कर दो। संडे को ही है ना वो गेम आप बोल रहे थे? सबने लगा फोटो कि भेज दिया कल है। अपना? सबने फोटो भेज दिया है? जिसने नहीं भेजा है अपना फोटो वो भेज दे, तब तो वो क्विज में ऐड होगा। अधवान का नहीं आया है, अधवान कोहली का फोटो नहीं आया है। चलो ठीक है, इस मीटिंग को एंड करते हैं। ओम शांति दीदी, शुभ रात्रि। ओम शांति दीदी जी, शुभ